We'll have a broad canvas to talk about. We've just defined or redefined for a lot of people what wellness actually means. And now let's look at how we can nurture, cultivate, and garner our wellness. And more importantly, we are going to look at it from the lens of nutrition, bone health, and mental wellness. Again, you know, somebody who's paying attention to each of these words, you would think that it's a universe in itself. It's going to be a struggle trying to, you know, cap it into the time that we have, but I'm so glad that we are having this conversation. So ladies and gentlemen, this panel is going to look at the topics of nutrition, bone health, and mental wellness as, you know, the lens through which we can nurture our wellness. Let me take this opportunity of inviting my worthy panel up here. My first guest is also a namesake. Her name is also Sidra Iqbal. Well, that's a whole different story, and we can delve into that later. She's a BS in Nutrition and Dietetics from the College of Home Economics and Nutrition in Karachi. She's registered with the Pakistan Nutrition and Dietetics Society, which is also known as the PNDS, and the Dubai Health Authority. She is right now currently practicing as a consultant dietitian at the South City Hospital. Please welcome Ms. Sidra Iqbal. Next up, ladies and gentlemen, as the medical director for the Ziauddin Group of Hospitals, our next guest exemplifies leadership in the medical domain. After completing his MBBS, he has distinguished himself in UK by attaining an FRCP and an MRCP in rheumatology, and further securing a CCT in both rheumatology and GIM. Of course, we'll be talking at length about bone health with him. Please put your hands together and welcome Dr. Asher Ikhlaq Ahmad. Ladies and gentlemen, my next guest needs no introduction. She is definitely a celebrated actor, singer, and a former fashionista from Pakistan who's predominantly worked in the Urdu cinema and television. She is best known for portraying a number of timeless classic characters such as Kashaf Murtaza in Momina Dure's Zindagi Gulzar Hai. But more importantly, we've seen her as an advocate for mental health and, of course, bone health for women, two subjects which are going to be a part of this conversation. A very dear friend, a very talented actor. Please put your hands together for Sanam Saeed. Ladies and gentlemen, last but definitely not the least, our guest is a consultant psychiatrist, co-founder and director of Synapse Pakistan Neuroscience Institute. She's graduated from the Dow Medical College and did her residency in general adult psychiatry at the Ahsan University. Ladies and gentlemen, she has extensive experience in leading and facilitating clinical training workshops, sessions for healthcare professionals, as well as general public on diverse topics related to mental health. Please put your hands together for Dr. Sana Siddiqui. So, ladies and gentlemen, I hope that we're audible. Let's do a quick mic check. We don't have feedback, so right now all mics are on, but may I request all our panelists to make sure that can perhaps start off with a number of health issues. But I notice a lot of women have a very acutely disturbing relationship with their body and with food. What is it that you're noticing, and how does it link to wellness? Okay, first of all, I would like to thank Shaista for having me on the panel, and thank you, Sidra Iqbal. Our names are so much same. Okay, almost so if similar. we talk about wellness, it's not only include the physical wellness. Now, studies are more focused towards the mental wellness and the relationship between your body and mind. तो अगर हम wellness की तरफ बात करें तो हम लोगों को बहुत सारे लोगों को पता है कि wellness के लिए you have to take a well balanced diet और आपकी diet जो है उसके क्या nutrients होने चाहिए. But most of the people don't know कि उनका mental state किस तरह का है, stress में वो किस तरह के हैं. So science जो है वो अब इसको और ज़्यादा demonstrate करी कि there is a relationship between your body, mind and your environment as well. कि आप किस environment में हैं. If you are physically well but are mentally people are mentally stressed, तो वो जो stress है वो उनकी body पे किस तरह से focus करता है. ठीक है. और अगर physically कोई उनको बीमारी है
तो उससे वो मेंटली किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं, ये एक कनेक्शन है, ठीक है। तो वेलनेस की जब बात आती है और स्पेशली वुमेन वेलनेस की बात आती है, तो वुमेन की लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे पीरियड्स की बात आ गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, या फिर रिप्रोडक्टिव एज आ गई, या लैक्टेशन पीरियड आ गया। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो वुमेन्स की ऑलरेडी हाई होती हैं एज कम्पेयर टू मैन, न्यूट्रिएंट वाइज अगर देखा जाए, ठीक है। फिर उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी का इफेक्ट है, लैक्टेशन का, पोस्टमार्टम जैसे बात की थी डॉक्टर तस्नीम ने कि इसका स्ट्रेस एक अलग होता है। तो उसमें रिक्वायरमेंट्स जो है वो वुमेन्स की अलग अलग होती हैं और उनकी बॉडी पे किस तरह इम्पैक्ट करती हैं कि वो किस तरह से उस चीज को कोप अप करती हैं, ठीक है। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट्स पता होती हैं, व्हाट इज वेल बैलेंस्ड डाइट, कि उनको न्यूट्रिएंट्स सारे अपने पूरे लेने हैं, कैल्शियम रिक्वायरमेंट, हीमोग्लोबिन। जब भी प्रेगनेंसी इस तरह की बात आती है तो आयरन लेवल्स पर फौरन बात होती है कि आयरन लेवल जो है वो किस तरह के हैं, हीमोग्लोबिन किस तरह का है। मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आयरन, बट वो नहीं जानते कि आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो किन चीजों से हिंडर हो सकती है। काफी लोग आयरन रिच फूड्स खा रहे होते हैं बट स्टिल दे आर हैविंग लो एचबीज। उसकी वजह ये होती है कि वो आयरन या तो उस टाइम पे नहीं ले रहे कि वो फुली एब्जॉर्ब हो, या वो इस चीज का ख्याल नहीं रख रहे कि उसको एब्जॉर्प्शन के लिए किस चीज की जरूरत है। लाइक जब भी हम आयरन लें तो उसके साथ विटामिन सी लेना जरूरी होता है। ये चीज बीइंग अ डाइटिशियन मुझे जो है, हम लोगों को जो है वो एजुकेट करनी चाहिए, कॉमन या ले पर्सन को, कि विटामिन सी किन किन चीजों में होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये आ जाती है, पीपल आर नाउ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स taking supplements, or they are taking supplements just like bunties, especially after COVID. कोविड में एक चीज आई एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम से, और लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट्स इतना लेना शुरू कर दिए कि उन्होंने सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिए। तो वी शुड नो कि जहां पर कोई डेफिशिएंसी होती है तो देयर इज अ टॉक्सिसिटी एज वेल। अगर कोई न्यूट्रिएंट आपको डेफिशिएंट है और आप उसको विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन ले रहे हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है आपकी बॉडी में। तो इस चीजों पर फोकस रखने के लिए लोगों को चाहिए कि एक तो वो किसी के सुपरविजन में लें, मल्टीविटामिन। हैविंग एन एक्सपर्ट टेल यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो बहुत जरूरी होती है। लेकिन जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि व्हाट इज इट दैट योर बॉडी नीड्स, व्हेनेवर आई एम एंग्री आई नीड अ चॉकलेट केक, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। सो आई मीन हम इस तरह गेज कर रहे होते हैं चीजों को। बट यू जस्ट मेंशन्ड यू नो पर्टिकुलरली कि ओवर द काउंटर जो हमें मेडिसिन या विटामिन या सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, दे कैन ऑल्सो हैव अ हार्मफुल इफेक्ट. So a little knowledge can actually be harmful. Dr. Asher, I want to bring this to you, especially when it comes to, you know, this sudden awareness that I want to work on my wellness. Lifestyle choices, we have a very sedentary lifestyle, but for being active, a lot of people have ended up joining gyms, working with personal trainers. It's a great step, but it also causes a lot of injuries. I see a lot of people either you know, breaking bones, falling down, going faster than their body is allowing. What's going on over there? Sidra, thank you very much for having me. सबसे पहले मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बता दूं कि आई एम अ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एज यू इंट्रोड्यूस्ड मी, लेकिन रूमेटोलॉजिस्ट होता क्या है और व्हाई एम आई ऑन अ फीमेल वेलनेस पैनल बेसिकली. द रीजन इज के रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जी थैंक यू. सो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो मोस्टली फीमेल्स के अंदर होते हैं. इन आवर क्लिनिक्स अबाउट 80% ऑफ द पेशेंट्स आर फीमेल्स. So I deal with them quite a lot on a daily basis. So I have developed an understanding of some of the issues which were talked about. Secondly, we're talking about 3 different types of conditions in my clinic. First of them are the autoimmune inflammatory conditions. There's about 200 plus conditions that we treat. But obviously अगर उस सारी डिटेल में जाएंगे तो probably आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा. So mainly I'm going to focus on more degenerative disorders जैसे osteoarthritis है, और उससे भी ज़्यादा बोन हेल्थ के हवाले से जो मेटाबॉलिक बोन प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, विच इज़ बेसिकली थिन बोन, पुअर क्वालिटी बोन, जो आप सुनते हैं कि किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, इंजरीज हो जाती हैं जैसे आपने कहा, और उसके नतीजे में बोन ब्रेक हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल. और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस या थिन बोन या भुरभुरी हड्डी जिसको आप कहते हैं उर्दू में, वो एक पेनलेस कंडीशन है तावक्ते के उसमें बोन ब्रेक हो जाए. ठीक है, सो इट्स कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल. उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चॉइसेस की हम बात करेंगे थोड़ी सी, और ये कि उसको स्क्रीन किस तरह करना है, उसको डायग्नोज कैसे करना है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली ट्रीटेबल एंड इट्स रिवर्सिबल. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट ऑस्टियोपोरोसिस? बिकॉज अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो एविडेंस टेल्स अस के फ्रेजिलिटी हिप फ्रैक्चर के बाद इवन अगर आपकी ऑपरेशन हो जाती है और आप ठीक हो जाते हैं
तो उसमें से 1 out of 4 people will not survive after the first year. और जिनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है because they're in generally poor health anyway, उनमें से 70% of them are not alive after 1 year. So it's quite a serious thing. By the time a woman comes to your clinic, कोई भी कंडीशन कितनी एडवांस हो चुकी होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली है. आप अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, यू मस्ट हैव नोटिस जितने घरों में मिलाद हुआ है, देयर सो मेनी वुमेन एंड दे इन देयर 30s एंड देयर 40s, लाइक हम नीचे नहीं बैठ सकते. What is going on over here? Whereas, even if I look around the region, women who are in their 50s, who are in their 60s, even 80s, you see them touring the world, especially of the Oriental origin, Chinese और Japanese ख़वातीन को देखें, हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए रिक्शे में बैठना, नीचे बैठना, नमाज पढ़ना, ये सब changes आ रहे होते हैं, but we are not paying heed to that. That's very true, and I think again going back to the thing कि मतलब न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि सिद्रा ने भी मेंशन किया था, और उसके अलावा जो लाइफस्टाइल है, विटामिन डी वगैरह का जो रोल है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, क्वालिटी ऑफ द सनलाइट कैसी है. देखिए इसके अंदर हमारे बिहेवियर्स हैं, बहुत सारी फीमेल्स बाय चॉइस कवर करती हैं बॉडी को, तो उसकी वजह से सन एक्सपोजर नहीं होता. हमारा एक बिहेवियर है कि वी अवॉइड द सन बिकॉज इट्स टू हॉट. तीसरी चीज़ ये कि हमारा कलर ऑफ स्किन जनरली इज अ बिट डार्कर और सनलाइट क्वालिटी भी पुअर है. सो ऑप्टिमम डेली जो लोगों को सनलाइट लेना चाहिए, बिकॉज आई गिव अ फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स एज वेल, इज एटलीस्ट 10 minutes एवरी डे. और जो मिड डे का सन होता है, यानी कि 10 बजे सुबह से लेकर के दोपहर 3 बजे तक का, तो उसके अंदर जो UVB जो लाइट है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो उसका 10 minutes का एक्सपोजर डेली इज नेसेसरी. थोड़ी हमारी सप्लीमेंट्स की बात हुई थी, एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन एंड क्योर के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त. तो हमारे एक्सपीरियंस में सप्लीमेंट्स का थोड़ा सा रोल है, बिकॉज जो डेली बॉडी का कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1200 मिलीग्राम है पर डे. अच्छा, अब एक ग्लास दूध जो है उसके अंदर 200 से 300 मिलीग्राम होता है कैल्शियम. सो नोबडी कैन ड्रिंक 3 to 4 glasses ऑफ मिल्क अ डे. सो वहाँ पर एक सर्टेन, अगेन इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट एट रिस्क इंडिविजुअल जो हमारे पेशेंट्स हैं या ओल्डर एज के फीमेल्स हैं जिनको कि मेनोपॉज हो चुकी है, हु विल, क्योंकि पीक बोन का जो मास होता है ना, जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग होती है फीमेल की बोन, वो बाय द एज ऑफ 40 होती है. उसके बाद जैसे जैसे हार्मोन्स के लेवल डाउन होते हैं, उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट लूज होता है, बोन थिनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो यंगर फीमेल्स को चाहिए कि अगेन बिकॉज ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स और अनफॉर्चुनेटली जो प्रेशर हमारी यंग फीमेल्स की होता है टू कन्फर्म टू अ सर्टन फिनोटाइप, वो अपना वेट को इतना कम बाज़ाफ़ा कर लेती हैं, वो अंडर वेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी होते हैं. उसकी वजह से उनको अंडर वेट होने की वजह से बोन्स के ऊपर जो एक स्ट्रेस होकर के बोन की हेल्थ और जो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं अचीव हो पाती. एंड आफ्टर दैट इट्स अ डाउनवर्ड जर्नी, बिकॉज जब आपके पीक बोन मास ही कम है, so you've got very little reserve to work with and you lose that very quickly. So एक adequate amount of weight जो कि BMI आपका around 23-25, मतलब 23 का टारगेट होना चाहिए I think, which is a healthy weight, वो मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, जो कि ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत अंडर वेट हो. तो ये सारी चीज़ें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं. हम अपने क्लिनिक्स में अगेन सप्लीमेंट्स की बात आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के लिए टाइप 2 कोलेजन विद एक्शियल मेम्ब्रेन इज समथिंग दैट वी रिकमेंड, बिकॉज उसके बेनिफिट्स हैं, पब्लिश रिसर्च है कि दैट हेल्प्स द कार्टिलेज, बिकॉज अगेन यू ट्राइंग टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर. उसके अलावा जो मतलब हम और अगर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें प्रिवेंशन के ऊपर, तो जो फीमेल्स who are about 60 plus without any significant comorbidities, उनको चाहिए कि अपना bone density scan कराएं. Right. So that is important because इसके लिए screen करना जरूरी है. And what is a bone density scan? It's a very very low dose X-ray. Even normal X-ray से भी कम radiation होती है. It's pretty safe. तो वो आप कराते हैं तो वो आपकी बोन के जो स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर करता है विद somebody of a peak bone mass, यानी 40-year-old female, 35-year-old female आपको बताता है कि जी आपकी बोन ठीक है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, और अगर वीक है तो वो ट्रीटेबल है. तो यू नो रेगुलर चेकअप्स, बोन डेंसिटी, sunlight, adequate nutrition, adequate supplementation, all of these things are so important. But you know, this is also a reality that our life pace is really fast, and to remember and to make time for yourself is always a challenge. Sanam, who better than you to be able to relate to that? But of course your word carries a lot of weightage. You're seen as a role model. What is your relationship with wellness, and how have you cultivated or created practices in your daily life to make sure that you're nurturing wellness? Assalamualaikum. So I was fortunate to have मेरी दादी मेरे साथ रहती थी और नानी, और दोनों almost 90 तक जिंदा रहीं. मेरी अम्मी 65 पे गुजर गईं. जो 50s में पैदा हुई थी ख़वातीन स्पेशली,
They were born in a time where एक बंदे की salary पे घर नहीं चल सकता. So the woman also had to work. And this is also post-war in the West and Pakistan also, everywhere, worldwide, where things became easier for the working mother. Matlab, instant khana, TV dinners, quick things for the mother to balance work and home life. Hamari nani dadiyan to housewives thi, so they had time to maybe do the khalis khana. What I've learned in my experience is to read labels, educate yourself. Yes. Teflon mein khana na pakaएं. Educate yourself. What are the drawbacks and the serious damages you're doing to your health by cooking in Teflon only because it's easy to clean. Steel ke bartan ko manjne mein time lagta hai. But that's why they lived till 1900. Powdered milk, what is that? What is powdered milk? But every office, every household, fakhar se powdered milk pilate apne guests ko aur khud ko bhi. Terrible. You have to educate yourself on the food you're eating. So khalis doodh, oil. What is canola oil? What is it doing to your system? Go back to ghee, sarson ka tel, coconut oil, cold pressed oils, natural khalis khana is the way to, we talk about supplements and focusing on diet and nutrition. People are, brands are marketing oils and milks and cereals with fortified XYZ. That's a lie. Your food will come from आप खुद उगाओ या खुद जाके market जाओ या खुद जाके press कराओ Empress market जाएं जहाँ से भी जाएं, but इसमें मेहनत लगती है. But that you अगर हम अपनी सेहत को वो attention और focus नहीं देंगे तो फिर तो all these doctors here sitting to treat people, then you will come with these osteoporosis problems, you will come with diabetes, sugar, instant noodles that you feed your children, junk food that you feed the children. Our children are going to be, if our parents are not living, जो 50s में पैदा हुए थे, अगर वो average 65, 70 तक जी रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो होंगे और हमारी जो generation होगी, we won't live till 80, 90. Maybe people like me and now our generation who are now in the 39, 40 age group, जो कि अपने माँ बाप को देख के, society को देख के, इस तरह के panels पे आके discussions करके हमारी awareness बढ़ रही है. So from that we are learning to, okay, जिस तरह मेरे घर में we now have no Teflon, our oil is different, our milk is different, our vegetables, no instant stuff. So small things like this, I think, have a huge impact on your health, on your longevity. And then, जिस तरह डॉक्टर साहब कहते थे, the sun, बहुत फिक्र है ख़वातीन को अपनी स्किन के कलर के बारे में. भाई मेलानिन आपको बचाता है स्किन कैंसर से, बहुत सी चीज़ों से. So appreciate the melanin that we have in our skin color. And definitely get sun. अगर आप बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं या बाहर कपड़े टांगने, whatever you're doing, just get that 10 minutes of sun. Put your sunblock on, but get your 10 minutes of sun. पौधों को पानी दे दें. जी आप अपने नानी दादी की जो lifestyle patterns थी ना, आप उनको देखें. We are working women where we don't have the luxury of sitting at home. We have enough time. We spend so many hours on our phone, wasting time. Social media and the telephone and internet on the telephone has been empowering, but it has also killed our brain cells. It has just made us so useless and lazy and complacent. तो वो आधा घंटा जो हम phone में online shopping करते हैं, it's just a matter of आप अपने brain में एक वो switch बना दें, and it just comes down to being aware and focused and taking into consideration all the talks that have happened on the panel right now, especially जो Dr. Tasnim बता रही थी, is to take out time for yourself, me time. नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हम डर के मारे पढ़ते हैं ना कि क्या होगा बाद में. आप उस इंटेंशन को बस स्विच कर लें कि ठीक है ये है अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए भी मैं ये कर रही हूँ. Your focus on your dua, on your intention. You can't just be rote narrating and saying your kalmas and ayats. You really have to just bring focus. And when you're focused, your duas will be focused. Your manifestation will happen faster. You will give yourself time. Time will happen. You will find time. अचानक से आपको मिल जाएगा. It's just a shift of focus. And all this comes from clarity of mind, from your diet. Sugar, you just said when you're in a bad mood, you eat your chocolate cake. That sugar spike and then that drop, it's just awareness and focus. And instead of spending time on other things, try to educate yourselves a little bit. Because अगर आपको लगता है अब तो हमारा ये system है अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप ये, because children follow by example. अगर अम्मी ये खा रही हैं, पी रही हैं, पूरा खानदान ये खा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? So lead by example so that the future generation is healthier.
I think those were excellent tips, and specifically जब हम बात करते हैं sugar की, sugar is 10 times more addictive than a lot of substances that we normally name when it comes to substance abuse, right? It is a drug, and your body craves more. Try leaving sugar for a couple of days, your cravings will actually go down. चीनी, चाय में चीनी बस, that's the biggest trick. चाय में चीनी, आप दूध भी ले लें, चीनी भी ले लें, आप जिंदगी automatically आपकी craving कम हो जाएगी. But Sanam, tell me something. What you're talking about is a mindset shift. I do want to ask you कि हमारी जो popular storytelling है, or the characters of the stories we see in dramas and television, उसमें हर negative practice को हमने glorify किया. Somebody, a woman who doesn't take care of her health is somebody who's glorified. You know, वो victim mindset में होती है, but she's presented as a martyr. रात भर हीरोइन अगर परेशान है तो वो सोचे जा रही है, शी इज नॉट स्लीपिंग. सुबह उठ के वो लड़की अपना नाश्ता नहीं कर रही, घर वालों को नाश्ता करा रही है, भेज रही है. नाउ दीज आर स्मॉल माइक्रो एग्जांपल्स ऑफ व्हाट वी कीप सीइंग, एंड अनफॉर्चुनेटली वी स्टार्ट ग्लोरीफाइंग इट. डू यू थिंक दैट्स हैविंग एन इम्पैक्ट? Of course it's having an impact, but I think more than TV, आप अपने घर में देखें, यही सब हो रहा है. You don't have to watch TV to be impacted by this. You just see your mothers at home, or the women in your household. Yes, dramas don't add to that. There are good dramas out there that have empowered women. तो अगर उस तरह के ज़्यादा roles हम दिखाएं जहाँ पे the woman is taking care of herself, then that definitely will have a positive impact on the viewer. Small practices, like when she's taking time to perhaps go see a doctor. हमारे यहाँ वो scenes भी बड़े insensitively handle होते हैं. But coming to the point I made with you with Sana, stress. हम में से हर शख्स आजकल स्ट्रेस के लिए कंप्लेन कर रहा है, और हम के ना कि जो हमारी डेली रूटीन है, इट्स सो रश्ड, आई एम ट्राइंग टू बी सुपर ह्यूमन, ट्राइंग टू डू so many things. How does stress, of course, have a connection with wellness in your domain, and also what can we do to manage it better? Okay, so stress basically सबसे पहले तो understand करने की चीज़ ये है कि stress actually होता क्या है. Stress कोई भी चीज़ which is putting a pressure on you, वो कुछ भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जो है वो हमारे struggles ही हों या हमारे concerns ही हों. Anything that is putting pressure is a stress. Is like basic definition stress की ये है. और अगर ये basic definition है तो anything and everything can be a stress. Usually it comes in human forms, like bosses, right? So that's just one aspect. और especially अगर आप professional setting में हैं तो फिर that would be one of your stress. But then your boss can be anything. Your time can be your boss. जैसे भी mention किया कि हमारे पास हमारी इतनी fast paced life है कि हमें सब कुछ अभी करना है. So that puts a lot of pressure on, and it's an undue pressure जो कि हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं. और एक तो एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है ही, और ऊपर से हम खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पर्सनल चॉइसेस के थ्रू जो है वो स्ट्रेस अपने ऊपर डाल रहे हैं. एक तो ये चीज़ है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, so it's all adding on to the pressure that is already there. So what's the alternative? I mean, that's the forum we are at. We know that it's a fast-paced life. ये stresses, ये obligations, ये हमारी time के ऊपर जो लोगों की requirements हैं वो रहेंगी. How can I cultivate my wellness in this lifestyle? So all of this is there for sure, और हमें अंदाज़ा है इस बात का कि this is not going away anywhere. और जिस तरह से दुनिया के सर्कमस्टांसेस हैं अभी आजकल, जो भी दुनिया में हो रहा है हर जगह पर, सो द आइडिया इज़ कि ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होना है, इसको बढ़ना ही है. सो जिस तरह से सभी लोगों ने एक बात जो मेंशन की है, एंड आई विल सेकंड दैट, कि जस्ट मेकिंग वेरी स्मॉल चेंजेस इन योर थॉट, हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स, and just being mindful of what is it that you're doing with your life and with your time and with your eating and your activity. Just being mindful and being aware makes a huge difference. Wellness is not rocket science. Like उसके लिए आपको अलग से panels करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए उसका अलग से time निकालने की ज़रूरत नहीं है. जो आप अपनी, and again, wellness is unique to everyone, every individual.
ऐसा नहीं है कि जो है हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सबको जो है वो दूध पीने की ज़रूरत है. आई एम जस्ट गिवन एन एग्जांपल. यस, दूध पीने की ज़रूरत है, बट देन देयर वुड बी सम पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंस, राइट? तो अगर हम उनको कह रहे हैं कि आपको जो है वो दूध पीने की ज़रूरत है, तो दैट्स गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर देम. Acha, that is the reason why we have a number of subject experts here. We wanted to take a variety of lens, just like nutrition, bone health, mental health. Dr. Ayesha, I want to bring this back to you. Modifiable risk factors. हमने, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, accept कर लिया है. My nanny was having problems with her knees. My mother is having problem with her knees and joints. तो मैंने accept कर लिया है कि मेरे साथ भी ये होगा. What are some of the adverse lifestyle choices that you see people of our generation making, which you know is a recipe for disaster? It is going to lead them to lower bone density, to problems in the future. तो Sidra, that's really important because देखें जो चीज़ आप modify कर सकते हैं वही वाली बात है कि stitch in time saves 9. So it's better to prevent the onset of the illness. So क्या चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं जिनसे कि modify करें? देखें patient की जो social history होती है वो बहुत important है. Do they smoke, for example? ठीक है? If somebody smokes, we know कि smoking calcium के absorption को भी कम करता है. We know that smoking promotes bone loss. So what's the alternative to smoking? So there are safer alternatives, and that First and foremost, try and quit. Try and quit, absolutely, for those who can quit. But see, somebody who smokes 40 cigarettes a day, उसको आप बोलें कि आप quit कर दें, वो आपसे engage नहीं करता. वो कहता है डॉक्टर बाकी सारी बातें करें इसके अलावा. ठीक है? So the message is very clear for those people who don't smoke, never start. ठीक है? Any kind of thing. For those people who can quit, absolutely quit. ठीक है? लेकिन there will be a certain group of people who will not be able to quit. तो उनको भी हमें tackle करना है, because our the whole theme is कि safer alternative उनको देना ना. It's very interesting that you've brought up smoking, and you've also identified earlier in your conversation that most of your patients are women. Do you see a rise in the number of women who smoke? Definitely, global up data देखें तो उसके अंदर एक rise हुआ है over decades. So there has been as a proportion. ठीक है? लेकिन ये कि जो कन्वेंशनल टोबैको स्मोक है, जो नॉर्मल सिगरेट है, उसके सेफर ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो आपको पेशेंट को वो भी ऑफर करने हैं. There's many things. There's nicotine gums, there's heated tobacco products. Now that is a view that is supported by the Public Health England, जो कि शो करती है कि 95% risk reduction with these smokeless products. ठीक है? So people who cannot give up, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है, अपना रिस्क 95% तो रिड्यूस करो. 95% रिस्क रिडक्शन इज बिग थिंग. दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिकन जो कार्डियोलॉजी सोसाइटी है, उन्होंने ये देखा कि जी जो लोग स्मोकिंग से ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर आए, तो विद इन द फर्स्ट मंथ उनका जो वैस्कुलर हेल्थ है वो इम्प्रूव हुआ. सो यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स एंड अदर थिंग्स. सो इट्स ऑल अबाउट हार्म रिडक्शन. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसमें एक इमोशनल रिस्पॉन्स लोगों का ये आता है कि जी बैन कर दें चीज़ों को, बट बैनिंग डजंट वर्क. यू सी, मेरे अंदर का भी जो इमोशनल डॉक्टर है वो यही कहता है कि बैन कर दो सब चीज़ें, बट डज बैनिंग वर्क? बैनिंग क्रिएट्स अ ब्लैक मार्केट. सो उससे दैट डजंट वर्क. अमेरिका में अल्कोहल बैन किया गया था एक टाइम पे, दैट क्रिएट अ बूटलेगिंग इंडस्ट्री. So the thing is to regulate it, and the thing is to educate people to safer alternatives. I also want to go back to our practices. I think Sana made a very valid point as to back in the day, a couple of decades ago, how our lifestyles used to be different. Sidra, food had a very different place in our societies and communities. We would all sit together for a meal. उस वक्त cell phones नहीं होते थे हमारे बचपन में, तो कोई distraction नहीं थी. Do you see this influx of digital social media that is pulling your attention away? आप जल्दी जल्दी खा रहे हैं. आप छोटे बच्चों को आदत डाल रहे हैं कि अगर उनको खाना खिलाना है तो साथ में उनका फेवरेट कोई भी कंटेंट आपने Netflix या YouTube पे लगाया. How does that change our relationship with food? हाँ, इसकी बहुत जो है एक इम्पैक्ट देखा गया है इसमें कि माइंडफुल ईटिंग लोगों की हट गई है. उनका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी लोग खाना खा रहे हैं वो या तो मोबाइल को देखकर खाना खा रहे हैं या टीवी स्क्रीन्स को देखकर खा रहे हैं. और ये भी बहुत एक प्रैक्टिस है कि पहले जो मदर्स थी वो होम कुक फूड बच्चों को ऑफर किया करती थी. उसमें एक सर्टेन एज पर आपको सर्टेन उसके फूड ग्रुप्स जो हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देने चाहिए, ताकि आप उनको टेस्ट बर्ड्स भी डेवलप करें. लेकिन लेटर ऑन अगर आप जैसे 5 इयर्स तक अगर आप बच्चे को जो भी टेस्ट बर्ड्स करवा देंगे वो उसकी पूरी लाइफ टाइम की हैबिट रहेगी. तो कुछ माएँ अब कंप्लेन करती हैं कि हमारा बच्चा सब्जी नहीं खाता या हमारा बच्चा ये वाला फ्रूट नहीं खाता, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो उसके अर्ली ईयर्स थे उसमें उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, या फिर इतनी जल्दी जल्दी उनको स्क्रीन टाइम देखकर खाना खिलाया कि उनको सिर्फ ये था कि उनको जैसे स्टमक फुल करना है, उनको कोई माइंडफुल ईटिंग नहीं थी कि वो न्यूट्रिएंट्स क्या ले रहे हैं
या मदर्स खुद भी एजुकेट इतनी उससे नहीं है कि हम अपने बच्चों को क्या ऑफर करें। इवन कि हमारे पास क्लिनिक में भी जो लोग आते हैं उनको वीनिंग डाइट वो कितना डिले कर देती है उनको खुद भी पता नहीं चलता, बस बॉटल फीडिंग पर जो है वो एक आ गई है चीज़ कि बॉटल फीड कर दिया। ऐसा वर्किंग वुमेन स्पेशली यही करती है कि बॉटल फीड दे दिया, या होम कुक फूड के अलावा जैसे जो रेडीमेड फूड मिलते हैं मार्केट में वो एक खिला दिया तो बस बच्चे को यही हो गया। लेकिन बात यह है कि वो उसकी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप नहीं कर रहे। यही बच्चे होते हैं जो जब आगे जाते हैं तो अब जैसे डायबिटीज़ है, बोन्स की जो भी डिजीजेस वगैरह हैं, कैल्शियम है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, उन्हीं बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या हम हिस्ट्री लें बच्चों की कि वो शुरू से क्या खाते आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जियां खाते ही नहीं हैं। जैसे हमारे पास एडमिटेड पेशेंट्स भी जो होते हैं उसमें भी हमें यही मसला आता है कि बच्चे फ्रेंच फ्राइज की डिमांड कर रहे हैं। And even for women, I see a lot of women who say कि जी I don't eat red meat, हम मटन नहीं खाते, हम बीफ नहीं Red खाते, meat नहीं खाते, और खवातीन ज्यादा चिकन खा रही हैं। Who's a chicken lover over here? अगर आपके मेन्यू पे Almost all. रेड मीट है और चिकन है, how many of you will prefer chicken? See? And how many of you want a thinner waist? Okay, see? So this is our relationship with body weight. अच्छा, एक और चीज जो भी मुझे recently पता चली, which is amazing, because now I can stop blaming my food, is you know, this information about visceral fat. How many of you think से अब आपके ट्रेनर के पास जाके आप उसको कहना चाहते हैं यार I want spot removal exercise, मुझे कुछ इस तरह बताएं जिससे मेरी कमर ज़्यादा पतली हो जाए, मेरी टांगें ज़्यादा पतली हो जाए. How many of you do that with your trainer? A lot of you do that. Only one brave woman has admitted to it. I do that as well. So we have recently found out that your visceral fat or the fat around your abdomen has nothing to do with food, and it has everything to do with stress. So everybody जिस बेचारे का एक टायर सा बना हुआ है, love handles, or you know the not so lovely name of a love handle, it is all about stress. Sana, I want to bring this one to you. Food, stress, body. यानी कई लोग कहते हैं problems. And then the other thing that you mentioned, the relationship of stress and the body. So stress has surpassed smoking as a risk factor for cardiovascular diseases, for cancers, certain cancers. So it has, and again I think Sidra ने शुरू में mention किया था कि your mind and your brain responds to a lot of environmental factors, and stress being one of it. और आपका ब्रेन जो है वो पूरा कंट्रोल कर रहा होता है आपकी बॉडी को, और अगर ब्रेन थ्रेटेंड फील कर रहा है, बिकॉज अगेन स्ट्रेस जो है वो थ्रेट क्रिएट करता है, सेंस ऑफ थ्रेट क्रिएट कर रहा होता है बॉडी के अंदर, अगर वो थ्रेटेंड फील कर रहा है तो इट ऑलवेज रिमेन इन द मोड ऑफ फाइट और फ्लाइट, और जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं, एंड देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली, और वो आपके बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जैसे मेंशन किया कि ओबेसिटी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऑल द क्रॉनिक डिजीजेस जिनको हम पहले लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते थे कि आपके खाने की वजह से, या जो है आपका अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसकी वजह से, now we know it's a whole orbit out there. I'm going to very soon open the floor for questions, but it would be a disservice if I have you here on the panel, Sanam, and we don't talk about failures as well, because mashallah you've had your fair share of achievements and accolades and global recognition, mashallah, but you know we don't teach our people, especially women, how to go through moments of, you know, the lower, the valleys, when you have grief, when you have stress, when you have failures. How did you deal with that in your personal capacity, and what's the message you'd give to others? That support is very important. It's really funny but very sad that shadi is the biggest form of stress for many people, but your biggest support system has to be your partner. If you're not married, then your family, your mother, your father, your siblings, your friends. Support system के बगैर तो आप failure से नहीं गुजर सकते इतने smoothly. जब सपोर्ट सिस्टम होती है तो फिर आप you acknowledge it as a part of your journey, you acknowledge it as when there are highs, there are lows, and you're not alone in your times, your low times. You have that support of encouragement, just someone to hold your hand when you're feeling down, and less sugar, like we're talking about stress hormones, cortisol. It really does affect you. अगर आप बहुत ज़्यादा smoke करते हो या बहुत ज़्यादा sugary foods खाते हो, your stress level, and you're constantly in a state of
not satisfied with your meals, not getting the nutrition from your meals, that all adds up to not being able to deal with stress and depression very well. So I think, alhamdulillah, because of my awareness of nutrition, because it's so important, and again, it's because I had a loss in the family that I forced myself to educate myself. So without a support system, it's just as simple as that. I think I've just been lucky with support and acknowledging ke hote hain ups and downs. It's not a ke oh ho ye kya ho gaya, ye accolade nahi mila, ya ye project nahi mili, ya ye attention is project se nahi mila, ya ye project release nahi hui. I mean, those are very trivial moments, only because I repeat support, support, support. But I do want to talk about one thing quickly, is educate yourselves on intermittent fasting. हम जो ये 3-3 meals दिन में खाते हैं, ये भी हमें बहुत slow down करता है. हमारी cells को मौका ही नहीं मिलता regenerate करने के लिए. So नाश्ता भी करना, नाश्ते में हम क्या खाते हैं, अल्लाह ही जानते हैं. फिर हम lunch में क्या खाते हैं, that same oil, and then that roti, chawal, and then the meats we eat, the injected antibiotic chickens that we all eat, and then dinner is the same thing, and then late night eating. Our system just does not get a break to kind of recuperate, regenerate, get a moment for our other hormones and our other cells to work. So इस पे आप please, इसलिए तो रोज़ा का इतना वो है वज़न, because it gives your system that break, but that's only 30 days in 365 days. Your eating pattern in generally should incorporate a 14-hour fast. इससे आपके cortisol levels भी नीचे रहते हैं, आपका stress level manage होता है, and overall it's a good place to be in to then implement all these things that have been spoken about today. Absolutely. I do want to open the floor for questions, but I just have this one thought. Dr. Asher, we often say that unresolved negative emotions tend to store up in your body, and they become trauma, they become psychosomatic symptoms. कई लोगों के frozen shoulders हैं, या घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है. What does science say about that? Is that unresolved trauma and emotions in your body as well? Definitely stress plays a role. जैसे for example एक condition हम लोग treat करते हैं fibromyalgia, which is a poorly understood pain disorder. Right. Very difficult to treat, sometimes a bit difficult to diagnose. ज़्यादा incidence females के अंदर ही है, but we definitely know कि stress plays a role. Stress plays a role. और उसके अंदर of course there is a psychological overlay as well that goes with anxiety and depression, और दूसरे कुछ conditions उनमें migraines की incidence भी ज़्यादा होती है, irritable bowel के symptoms भी होते हैं कि बार बार पेट में दर्द होना, washroom जाना या constipation side पे होना. But is it the disease that is causing the mental problem? Because of course a chronic health issue है तो उसकी वजह से कुछ mental problems होते हैं, or is it primarily a mental illness which is causing these symptoms? That's a debate. But definitely. But some people would go as far as saying that particular emotions show up in your body. अगर आप अपने body, because अल्लाह ताला ने एक living organism है, आपको ये system दिया हुआ है. मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं, if your upper body and your upper back is hurting, that basically means you're feeling emotionally unsupported. If your lower body is hurting, it's usually lower back में अगर आपको pain है, तो it's either the fear factor कि आप you're living in lack. आपको पैसे खत्म हो जाने का खौफ है. So different parts of your body is trying to communicate with you, and because आप उसको attention नहीं दे रहे through mindfulness, then the body is acting up to talk to you. So ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for my panel here, please. And let's take a few questions. And if you have any questions online, so please मुझे वो somebody can be kind enough to bring them to me, but let's first interact with our audience here. Show of hands and a mic will be directed to you. आप कोई भी सवाल कर सकते हैं. Yes, ma'am. May I have a mic come to you, please? Yes, we can hear you. Close. My name is Hina Sohail. I'm a yoga teacher and a wellness coach. हम लोगों ने बहुत अच्छी यहाँ पर बातें की हैं about nutrition, about stress. I do want to know more about how to release the stress and how to release negative emotions, जो कि डॉक्टर साहब ने भी अभी हमें बताया कि हमारी बहुत सारी बीमारियों की वजह होती है. So how to release the negative emotions, how to release that stress, and the importance of exercise and yoga and other things. How we women can incorporate the exercises within the boundaries in their homes, ताकि वो सब ख़वातीन के
पहुंच हो उन एक्सरसाइजेस की। बहुत शुक्रिया। हालांकि यूट्यूब पे सब मौजूद है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट अ मोर एक्टिव लाइफस्टाइल इफ यू डोंट हैव द मीन्स टू गो आउट, बी एट अ जिम एटसेट्रा, एंड ऑल्सो हाउ टू रिलीज स्ट्रेस। मुझसे कोई पूछेगा तो कहेगा आई विल से गो ऑन अ वेकेशन, बट दैट्स प्रोबब्ली नॉट द एडवाइस यू वांट राइट नाउ। सना, आई वांट टू ब्रिंग दिस वन टू यू। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि देखिए इमोशंस जो हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होते, इमोशंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप फेयर को एक्सपीरियंस करें या आप लॉस को एक्सपीरियंस करें। सो प्लीज़ डोंट पुट क्वालिटी टू योर इमोशंस आर इमोशंस। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं तो उनके लिए आउटलेट होना चाहिए फॉर श्योर। डिफरेंट लोगों के लिए आउटलेट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आउटलेट हो सकती है, और फिजिकल एक्टिविटी में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे बात की है कि बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे लिए कोई चीज़ ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी लाइफस्टाइल के विद इन ही आप क्या चीज़ें जो है वो इनकोऑपरेट कर सकते हैं, जिनको आप लेबल कर सकते हैं कि ये मैं अपने आउटलेट के लिए कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिफ्ट यू यूज स्टेयर्स, फिजिकल एक्टिविटी ही हो रही है, थोड़ा सा आपका इमोशनल रिलीज भी हो रहा है, थोड़ा सा जो है वो आपकी जो पेंट अप एनर्जी है आपके अंदर तो वो रिलीज हो रही है। सो जस्ट लुक अराउंड योर, जस्ट बी लाइक लिटिल माइंडफुल ऑफ योर लाइफस्टाइल, और सिर्फ ये देखें कि हम किस चीज़ को क्या चीज़ लेबल कर सकते हैं, ताकि जो है वो एक और एडेड प्रेशर ना हो कि अच्छा मुझे जिम जाना है एक्सरसाइज करने के लिए, या जो है वो मुझे योगा करने के लिए जो है वो एक स्पेस बनानी है। Whatever you could include in your own lifestyle. Can I just add to that? I feel हम ख़वातीन एक बहुत बड़ी गलती करती हैं कि हम जहाँ पे कन्वीनियंस के लिए ऑप्ट करना चाहिए वहाँ कन्वीनियंस के लिए ऑप्ट नहीं करती। And when you start opting for convenience in those places, it will start freeing up your time. तो अगर आप ये कह भी रहे ना कि ठीक है ये बड़ी अच्छी बात है कि विद इन द हाउस होल्ड आप ढूंढें, छोटी बहुत एक्सरसाइज वहीं कर लें, घर में आपके पास स्पेस है तो कर लें, बट ट्राई टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि इट्स एब्सोल्युटली गोइंग टू बी ओके। आपके घर की छत नहीं गिर जाएगी अगर आप अपने बच्चों को 30 मिनट के लिए घर वालों के पास या किसी के पास, हम वी ट्राई टू होल्ड एवरीथिंग, हमें बेस्ट बहू का अवार्ड भी चाहिए, बेस्ट मदर का अवार्ड भी चाहिए, बेस्ट वाइफ का अवार्ड भी चाहिए। सो मेक स्पेस इन योर लाइफ फॉर योर सेल्फ। अब उसके बाद आपको किसी पार्क में निकल के चहलकदमी करनी पड़े, व्हाई नॉट? आई मीन यू आर अ लिविंग ह्यूमन बीइंग एज वेल हु नीड्स टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। व्हाट डू यू से? राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड आई थिंक जब आप एक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे होते हैं तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू इवन सी। एग्जैक्टली, हमने सारों ने कोशिश, देखें वी ऑल ट्राइड टू लूज वेट इन कोविड, डिडंट वर्क। घर में थे ना, बड़ी एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। द प्रॉब्लम इज अस एंड वी नीड टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम। लेट्स टेक मोर क्वेश्चंस। There are two more. Ma'am in blue, lovely blue there is. Beta, mic le jao. Assalamualaikum. I'm Muzna Qureshi and I've specially flown from Lahore to attend this symposium, and I think it was an excellent choice. Thank you. I'm enjoying every minute of it. I just wanted to bring your attention to something. When we are talking about stress and anxiety, and how to sort of come to a remedy, तो हमने एक चीज़ बिल्कुल डिस्कस नहीं की, वो है living in the present, which is so important. I feel कि हम सब लोग, चाहे हम मर्द हैं चाहे हम ख़वातीन हैं, we don't live in the present. जो हमारा लम्हा जिसमें हम जिंदा हैं उसको हम अप्रिशिएट भी नहीं करते, उसमें रहते भी नहीं हैं। We either are dwelling in the past or we're thinking about the future, and we don't realize कि देखिए जो आपका मौजूदा लम्हा है, it is so important. Everything is this लम्हा. You have to दुख के लिए ना आपको you have to go into the past. तकलीफ आपकी प्रेजेंट में हो सकती है, दुख नहीं हो सकता. And for your khawf, which you're talking about, the fear factor, that is in the future. So dwelling in the future and living in the past are both, I think, dangerous for your health. Right. I think what you've just said, it reminds me of one of my coaches. उसने कहा, I had
and I would admit there were things in life, there were experiences in life that I was holding on to and I was not willing to let go. एक जहन में आपकी हमेशा एक अदालत लगी होती है और आप कहते हैं यार मेरे साथ ना बड़ा बुरा हुआ था, and you keep going back to that and you keep reliving that thing. So when I was struggling with this one particular piece and letting go, मेरी कोच ने कहा कि okay what happened, and I started अपनी दुख भरी दास्तान दोबारा नरेशन हमने सुना दी. तो उसने कहा listen, this happened a year ago or maybe 6 months ago. Now that incident, that experience has ended. What you're doing is you're using that to feel bad in this moment. वो चीज़ जो होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन आप उसकी याद को, उसकी recalling को, you're using that to use, spoil this particular moment. So when you shift your perspective like that, it really makes a difference. But I would love to hear from Dr. Usher on this. How do you come back to the moment? As a doctor, I'm sure just like the rest of us, you have personal problems, you have issues. How do you bring yourself back to the moment and listen to somebody or treat somebody? I think again, it's very, very difficult, and everybody will come up with their own sort of plan and develop their own approach. मतलब ये कि again, I think some of it is to do with mindfulness. कि आप मतलब you live in the moment, you focus on your breathing, you focus, because everybody has stressful time periods. कोई unwell patient होता है, कोई sick patient होता है, you feel concerned for them. But then I guess there is no single solution that would fit for everybody. Everybody comes up with their own. Do you have struggle saying no to people? Mindfulness में ये तो होता है ना, अब इस moment में you want this moment to yourself, but 5 people are asking for something. How do you say no? Very difficult. It's I think probably इसका एक course पे जाना चाहिए जिसमें कि a course to be able to learn how to say no. Yes. Because it's very, very difficult to say no. There's work pressures, there are pressures from all sides. I love this one saying. People turn around and say, मुझे जो बहुत ज़्यादा लोग तंग कर रहे होते हैं मैं उनको कहती हूँ, listen, I can only please one person a day. Today is not looking good. Tomorrow is also not your day. Maybe try back 1 month later. And if that one person that you have to make happy every day can be yourself, nothing like it. Last question from the audience over here. Yes, ma'am. That hand went up first. Do we have any questions online that we'd like to ask the audience? Oh, the panel? Yes, ma'am. नमस्कार. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हो कि स्ट्रेस का कॉज क्या, आप कहते हो कि आप शादी के बाद तो आपको स्ट्रेस है, वो है क्या? क्योंकि औरत शादी तो एक आदमी से करती है ना, पूरे खानदान से थोड़ी करती है. हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि सभी सास भी है, ये भी है, सारे यहाँ पे बैठे हैं जिनके बेटे हैं. आप कितने मुझे बताएं कि इस्लाम में तो कंसेप्ट है ही नहीं कि हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहें ना. हम कितने हैं जो कि हम अपने बेटे को अलग कर देते हैं. आगे वही एक बात है कि ये बहू ही खराब है और इसी का कसूर है, तो हम इस चीज़ पे तो बात ही नहीं करते ना. तो ये कि स्ट्रेस आ कहाँ से रहा, ये भी तो देखें उसका कॉज क्या है ना. और दूसरी चीज़ ये कि अवेयरनेस की बात, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि आप ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन आप ये नहीं बात करते कि ब्रेस्ट फीड कितना नेसेसरी है, उसकी नेसेसिटी क्या है. क्योंकि मैंने खुद लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि जी फर्स्ट 3 days का जो मिल्क होता है वो बहुत आई थिंक पॉइजनस होता है, और वो प्रूव भी करके आपको दिखा रहे होते हैं. और वो गाँव वगैरह में मैंने खुद देखा है कि लोग पिलाने नहीं देते मदर्स को कि ये सही दूध नहीं होता. तो आप अवेयरनेस इस चीज़ की भी तो क्रिएट करें ना. हम तो कहते हैं कि ठीक है कि मेंटल हेल्थनेस है, सब कुछ है, व्हाट्सएवर न्यूट्रिशन है, आप उस पर फोकस नहीं करते ना. आप क्योंकि एड्स आपको बहुत ज़्यादा लोगों को वो माइंड उनका सेट करती है, क्योंकि मैंने खुद देखा है. I'm going to take that question in reserve because our next panel is about maternity and about the health of mothers, young mothers, contraception से लेके postpartum तक. तो मैं आपका सवाल रिजर्व में रख लेती हूँ because it's related more to that, and I'm going to take up breastfeeding in it. Thank you very much, ma'am, for that question. I can take one more question from this live audience, please. And there is one right here, the lady in the pink scarf in the first table. Can you bring the mic to her? Assalamu alaikum, ma'am. I'm from Jinnah University for Women, and I'm pharmacist also. So I want to ask ma'am Sidra कि आजकल जो है लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, एंड देयर आर मैनी एप्स. आप ये डाइट कर सकते हैं, आप ये डाइट कर सकते हैं. तो व्हाट डू यू से, आप सप्लीमेंट्स के बारे में भी बहुत सारे, जैसे आपने मेंशन किया कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो क्या ये एप्स डू दे वर्क और हमें उन पर रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ले मैन हैं, और हमारी लेडीज़ जो हैं वो घर में सिर्फ ये स्क्रॉल आउट कर रही होती हैं. तो क्या हमें इन पे मतलब
रिलाय करना चाहिए? Thank you so much. Thank you. अच्छा, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो जिस सोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब उसकी एक होती है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कि वो क्वालिफाइड है भी या नहीं। अब आजकल बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो कि एक्चुअल क्वालिफाइड नहीं है, ना वो कहीं से रजिस्टर्ड हैं, बट वो कुछ डाइटरी हैबिट्स ऐसी कर रहे हैं, जैसे कीटोजेनिक डाइट है। कीटोजेनिक डाइट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर मेडिकल कंडीशन, जो सीजर, जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, और फिर वो हर एक के लिए है या नहीं है। लाइक पैकेजेस अगर आपको वो ऑफर कर रहे हैं आपके बॉडी फ्रेम के लिए, वो आपका कितना ज़्यादा उसमें रोल है कि वो कस्टमाइज डाइट प्लान है अकॉर्डिंग टू योर BMI, योर कैलकुलेटेड रिक्वायरमेंट। अगर ऐसा है तो फिर आप उस पर चले जाएं और अपना वो करवा के कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन और ऑथेंटिसिटी देखना ज़रूरी है कि वो कितना ऑथेंटिक है और आप के लिए वो कितना पॉसिबल है। मतलब ये तो फैंसी राइट्स होती हैं कि आप ये खा लें, इतनी कैलोरीज कैलकुलेटेड हैं, भाई वो आप घर पे भी करके खा सकते हैं। और अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करना में भी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि आप अपनी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सीख सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए फॉर वेट रिडक्शन, कितनी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, तो वो आप खुद कैलकुलेट करके ले लें। हाँ, जहाँ तक बात आती है कि ये जो फैंसी जो टेट्रापैक्स वगैरह या इस तरह के जो खाने मिलते हैं बाहर, एक्चुअली इनमें सोडियम कंटेंट कितना है या इनमें प्रिजर्वेटिव्स कितने यूज किए गए हैं वो भी आपकी बॉडी को हार्म ही करेंगे। तो हमेशा ऑर्गेनिक की तरफ रहें, घर का होम फूड कुक फूड जो है वो उसको यूज करें और अपने आप को उस पर एनालाइज कर लें कि वो जो आपको प्रोवाइड कर रही हैं चीजें उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है और आपके लिए वो कितना ईजी है। Thank you so much for that. Ladies and gentlemen, a big round of applause for my panel. They were absolutely fantastic. May I request you all to please come forward for a group picture, and may I also request my dear friend Shaista to join us up for a photograph, please. You and I can stand in the middle. Let's first take a picture. यहाँ आ जाए हम लोग. Shaista, come. Thank you so much for that. We're done with the photos. We'd like to present a small token of appreciation to each one of our panelists. Let's begin with my namesake. Let's have one for Sidra Iqbal. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our lovely panelists. Bring the next one as well. The honor. Thank you, Dr. Sana, for being here. Ladies and gentlemen, we are going to segue into our second panel